प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारा जिला प्रमुख आदरणीय मुरब्बी श्री कीर्तिसिंह वाघेला जी, हमारा पार्टी संगठन प्रभारी मुरब्बी श्री जयंती भाई कवड़िया जी, आजना मुख्य वक्ता ने हमारा धारासभ्य मांडवी एवं अनिरुद्ध भाई, पालनपुर धारासभ्य मुरब्बी श्री अनिकेत भाई, वावना धारासभ्य स्वरूपजी ठाकुर, हमारा संसद लड़ाट एवं बेन श्री रेखाबेन, हरिभाई चौधरी, दिनेश भाई अनोरिया, घना बधा આગેવાનો અને ખાસ કરીને પત્રકાર મિત્રો, ભાઈઓ અને બહેનો, આજે 9 જૂને 11 વર્ષ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने पूर्ण थया छे। 11 वर्षनी अंदर આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે 11 વર્ષમાં કરેલા કામો અને 18 વર્ષ जवाहरलाल नेहरू जी स्वर्गस्थ अपना वडाप्रधान था, 16 वर्ष अपना इंदिरा गांधी जी स्वर्गस्थ ये पण वडाप्रधान था। आ बधाना कामोनी तमे आपणे तुलना करीए तो आपने एम थाय कि खरेखर आपणो देश ज्यारथी आजाद थयो अने आजाद थया पछी जे लोकोए वहीवट कर्यो एमां खास करीने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहेबे 2014 थी जो शुरुआत करी थी, जे वचनों आप्या था ये बधा वचनों आज पूर्ण करीने एमां केवी रीते आगळ वधी शकाय ए प्रकारनुं सरकार आज काम करी रही है। मने जणावता वातनो आनंद छे कि आज 2014 में त्यारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब पहली फेर गुजरात में मुख्यमंत्री तरीके वडाप्रधान तरीके तो आगे पहुंचा त्यारे आपणा देशनी शुं परिस्थिति हती, आपणो देश क्या हतो, आपणे कई परिस्थिति में जीवता था, आपणो देश में विश्व में आपणुं शुं हतुं ए आपणा माटे बहु महत्वनुं छे। घणा बधा मित्रो जाणता हशो कि आखा विश्व में જ્યારે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ આવ્યા ત્યારે આર્થિક જે સ્થિતિ હતી આપણી, જે આપણું બજેટ હતું, મને આજે કહેતા છે કે મનમોહન સિંહજી ત્યારે વડાપ્રધાનની શરૂઆત કરી ત્યારે દેશનું બજેટ 2,32,000 કરોડ રૂપિયા હતું। આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે વહીવટ સંભાળ્યો અને આજે કહી શકાય કે 50 લાખ કરોડથી વધારે આ દેશમાં સૌથી ઇકોનોમી શક્તિનું કોઈએ કામ કર્યું હોય તો તમે કલ્પના કરો 1947થી દેશ આઝાદ થયો અને 2014થી 11 વર્ષમાં આપણો દેશ 11મા સ્થાને હતો વિશ્વમાં અને આજે આપણે 5મા સ્થાને છીએ।